हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आई एम डूइंग अ इंस्पायर्ड मेकअप लुक ऑफ निशू खान। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first I'm using Maybelline Nude palette for my eyebrows, this brown shade. So next I'm using Maybelline Fit Me Concealer in shade 10 to conceal my eyelid for eyeshadow. Next I'm using that same palette to set my eyelid. This is like a compact shade. Next I'm taking Huda Beauty textured eyeshadow palette in rose gold and I'm taking shade Henna as a brown. Next I'm taking brown shade called Cocoa. And next I'm taking again that same palette from Maybelline and I'm using that brown shade I used before for my eyebrow, and I'm placing that eyeshadow on my Out of King Makeup Revolution London eyeshadow palette for my eye corner, and I'm using this silver glittery shade and I'm placing it on my eye corner as you can see with the sponge brush. And next I'm taking my Heart Pressed Glitter eyeshadow, this silver, and this palette is from Huda Beauty and it's a dupe palette, and I'm placing it in my inner corner eyelid as you can see. Next I'm taking Makeup Revolution London blush palette and I'm taking this pink highlighter and I'm placing it my middle of eyelid. Next I'm again taking that same palette and using this black eyeshadow for my eyelid. For falsies I'm taking Dekhiye Beauty 3D Mink eyelash in the number EM58. Next I'm taking cleansing facial mist from Good Vibes. Moisturizer I'm using coconut brightening cream from Good Vibes. To moisturize my lip I'm taking strawberry crush lip balm. Next I'm taking spotlight illuminating lotion from Color Bar. इससे मेरा फाउंडेशन और ही फ्लॉलेस एंड ड्यूई लुक आएगा. For primer I'm using Mario primer. It's a silicone based primer and the best primer I've ever used. For foundation I'm using Revlon Photo Ready Airbrush Effect Foundation. Concealer I'm using Krylon Supra in the shade FS38. To set my base I'm using Miss Claire translucent powder in the shade 4.
Okay, so for powder contour I'm using Anastasia Bravely Heal Powder Contour Kit and ये शेड है ब्राउन। सेम ब्राउन शेड से मैंने अपने नोज को भी कॉन्टूर किया है। Next I'm taking MAC blush palette, it's a dupe palette, and I'm using this lighter peach shade. To set my makeup, I'm using Face's all-time makeup pro fixer. For lipstick, I'm using Huda Beauty pink lipstick. It's a dupe lipstick. Next I'm taking Victoria's Secret Velvet Matte Lipstick in the shade brown. For highlighter I'm using Anastasia Bravely Glow Kit Highlighter in the shade white. इसे सिल्वर भी कह सकते हैं बट मुझे वाइट लगता है। वाइट हाइलाइटर से मैं अपने नोज को भी हाईलाइट करूँगी अपने फिंगर से, बिकॉज ब्रश से बराबर नहीं हो पाता है। And next I'm taking that Huda Beauty Rose Gold eyeshadow palette and I'm taking Cocoa shade, and for my lower lash line मैंने काजल यूज़ नहीं किया है बिकॉज इससे मेरा लुक बहुत ही अच्छा आ गया था। And this is my jewelry for this outfit and makeup look. मुझे ज्वेलरी में मांग टीका नहीं मिला था, उसकी जगह रिंग थी, so here it is and this is the final look. होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। इंस्पायर्ड मेकअप लुक ऑफ निशू खान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।